मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई अप्रिशिएट इट। और before we go right into the heart of what you're really doing, could you give us just a small little summary of what is it that you have conceived for Dharavi? What I've conceived for Dharavi is, firstly, I'm trying to convert the challenge of slum rehabilitation into an opportunity to create a middle-income suburb. And I'm working towards mainstreaming the slum dwellers with the rest of Mumbai. Mainstreaming यानी कि जो slum dweller हैं वो मुंबई का हिस्सा बन जाएं। हाँ, इसके बजाय कि वो हमेशा झोपड़पट्टी वाले रहें, झोपड़पट्टी वाले ना रह करके वो लोग भी मुंबई के अंदर इस कदर घुल मिल जाएं कि दोनों के बीच में कोई खास फर्क ना रहे। हाँ, और बम्बई के बाकी के लोग जो आज धारावी में नहीं जाते हैं, उनको भी धारावी जाने का एक मौका मिलना चाहिए और वजह कुछ मिलनी चाहिए। उस तरह से धारावी को बाकी के रेगुलर सबर्ब्स की तरह डेवलप करना हम जी हाँ, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी मिडिल क्लास का शख्स हो या अपर मिडिल क्लास का या रिच क्लास का होगा, वो काफ़ी हिचकिचाता है धारावी की तरफ जाने के पहले, क्योंकि धारावी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एज द बिगेस्ट स्लम व्हिच इट इज राइट नाउ. So as a result of which people are very hesitant in going over there. That is true, but the sad part is people misunderstand that it's also a sort of underworld area, which Correct. it isn't. Correct. लेकिन so there's a lot of misconception. इमेज अभी तक वही है कि अंडरवर्ल्ड का इलाका है, क्राइम प्रोन इलाका है, यहाँ अंदर जाओगे तो तुम लुट जाओगे, मर जाओगे, इस किस्म की टोटल गलतफहमी है। राइट। और मेहता साहब के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, थोड़ी सी बैकग्राउंड इसके बारे में हम आपको दे दें कि 2 महीने पहले हमारी संवाददाता अपर्णा शंकरन ने धारावी को पुनर्वसित करने के लिए कोशिश करने वाले मुकेश मेहता से, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, उनकी योजना के बारे में जानकारी हासिल की। इस प्रोजेक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही 5 से 6 साल के भीतर धारावी को नया रूप दे दिया जाएगा। आज इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। आइए इस रिपोर्ट को हम दोबारा देखते हैं। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी माना जाता है। 1741 हेक्टेयर के इस इलाके पर नजर दौड़ाएं तो ये बात सच साबित होती है। धारावी कई कहानियों और डॉक्यूमेंट्रीज का आधार भी बनी है, जिसमें ज्यादातर यहाँ के दूषित पर्यावरण, अवैध संस्थानों, जुआघरों, नशीली दवाइयों और वेश्यावृत्ति को ही चित्रित किया गया है। लेकिन यहाँ के अनगिनत कारखानों में चमड़े का बेहतरीन सामान, कपड़े और बर्तन बनाए जाते हैं। इस जगह के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ 3000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा बिजनेस टर्नओवर की क्षमता है। जरा सोचिए कि धारावी को एक नए रूप में विकसित किया जाए तो कैसा रहेगा। यही ख्याल है मुकेश मेहता का, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट अवर स्लम्स नाम के झोपड़पट्टी के विकास की योजना को पेश किया है। उनका मानना है कि सही योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस क्षेत्र को एक आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र में बदल सकता है। These are migrant people who come to Mumbai for economic opportunities, and they live in these kind of appalling conditions. So it's our intention to convert these slums into relatively good quality, decent quality housing, as well as provide economic opportunities. Now we feel that if these 55% of the people are provided economic opportunities, then in fact they can become engines for economic development for Mumbai. And these days we are talking about rejuvenation of Mumbai. Slum dwellers can become the biggest assets as far as that redevelopment plan is concerned. 2002 नवंबर में सरकार को पेश की गई योजना के अनुसार धारावी को 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर को एक प्राइवेट डेवलपर विकसित करेगा। स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत 1995 से पहले आए हर परिवार को 225 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा। इस योजना को असली जामा पहनाने के लिए 5300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और ये फंड उस सेक्टर का बिल्डर ही जमा करेगा। धारावी को पूरा नया रूप देने के लिए योजना शुरू होने के बाद 5 से 6 साल तक का वक्त लगेगा। Sustainable really stems from a 5-point formula which I have recommended to the government, which is to say that they must have infrastructure for good quality health, income, knowledge, environment and socio-cultural development, which I call HIKES, H-I-K-E-S. And if you provide that, then the slums will become sustainable and gradually they'll turn into middle income communities. योजना के बारे में कई सवाल भी उठते हैं, मसलन बिल्डर के साथ किस हद तक पारदर्शिता बरती जाएगी और ये योजना असल में लागू करना कितना संभव है। इस योजना पर स्पार्क एनजीओ ने कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं।
ये जो 5 साल का जो उन्होंने जो टारगेट करके जो काम करने देख रहे हैं, ऐसा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इतना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग अगर वो भी सकता है, क्योंकि लोग सही तरह से जो मालूमात ये लोग देंगे वो हिसाब से अगर लोग को पता होगा फिर लोग जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों को अंधेरे में रख के अगर कुछ होगा तो फिर मुश्किल है। फिलहाल इस योजना को महाराष्ट्र सरकार से सैद्धांतिक रूप में सहमति मिल चुकी है और इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। धारावी को एक मुनाफा देने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में बदलना एक महत्वाकांक्षी और मुश्किल काम है। फिलहाल कागजों पर बहुत अच्छी दिखने वाली इस योजना के अमल में कई मुश्किलें सामने होंगी, जैसे पूरी योजना के लिए सही समय पर फंड्स मिलना और इस सभी पहलुओं का कोऑर्डिनेशन। इन सब के चलते अगर ये योजना सफल हुई तो ये एक उदाहरण बन जाएगा। अपर्णा शंकरन, सहारा समय, मुंबई। और 2 महीने पहले इसी रिपोर्ट को सबसे पहले यहीं आरकेबी शो में दिखाया गया था और आज हमने ये रिपोर्ट दोबारा इसलिए दिखाई है क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं मुकेश मेहता, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं। मुकेश जी, अभी 2 महीनों में क्या क्या फर्क आया है उसके बारे में जरा बताएं। एक दो फर्क ये है कि ओरिजिनली जो हम 12 सेक्टर का सोचते थे वो अब 9 सेक्टर में, 12 के बजाय अब 9 सेक्टर, हाँ 9 सेक्टर हुए हैं। दूसरा जो मेरा ओरिजिनल प्लान था 6-7 साल के पहले, जिसको हम धारावी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सबब बनाना सोचते थे, वो अब उस किस्म से किया जा रहा है ताकि इट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट्री सबब टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जी। एंड अलोंग द माहिम क्रीक। व्हाट डज दैट मीन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सबब? हाँ, इसका क्या मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स विल बी द मेन सबब एंड दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री सबब? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इज प्राइमरली ए कमर्शियल hub. What we feel is that along the across the creek, the Mahim Creek or the Mithi River is Dharavi. Now along that creek we can also make a part of Dharavi as a commercial hub, and then inside we can make it a more residential or for rehabilitation purposes. तो मतलब आप आगे आप बात बताएं, उसके बाद मिठी नदी के बारे में जरा बात करेंगे, जिसको मिठी नदी कहा जाता है। उसको क्लीन करने की भी कोई प्लान है कि because still you clean it up, your plan may not work? No, in because fact, it's the most polluted creek in this that part of the is world. true. In fact, I have suggested to the government that we can make that Mithi River into an eco park Right. because there are beautiful mangroves over there, and this can be done, in fact, with hardly any investment from the government through private enterprise again, just as we are doing Dharavi. No investment, but a lot of prevention. Because all those oil mixing things and everything else That's that right. The gets poured into depollution, it. but the That's depollution over 3 to 4 years we can depollute naturally if we do not allow any further pollution That's to right, creep that's in. It's a lot of hard work and a lot of sensitive work, but it can be done. It's not impossible. Right. तो अब आप बता रहे थे कि मतलब 12 सेक्टर नहीं 9 सेक्टर हैं और it will be a complementary suburb to बांद्रा कुर्ला। The whole idea is कि बम्बई के जो लोग हैं उनको धारावी जाने की वजह क्या हो सकती है। So when we arrive at a sustainable development, so we create cultural centers within Dharavi so that others from Mumbai, supposing we had an experimental movie theatre, let's say, then even the upper strata of the society, where because today you have no such experimental theatre, exclusively for Mumbai. Then upper strata society will want to go. Did you take this from what they did with Harlem in New York? Because at one time Harlem had become a bit of a problem. I like to feel that I'm original. today you got all the art galleries there. Today you've got everything else over there, and as a result of it, it's become the art district. In fact, I'm inspired by a lot of development in US, especially in New York, where they have taken Soho, where they are taking Harlem. And a lot of the yucky areas are being upgraded into yuppie areas. Yeah, into yuppie areas. So essentially, that is one of the sources of inspiration. So this is absolutely inspired thinking, and what you have really done is absolutely inspirational. Now, if you could only get around to implementing it, आप ये कह रहे हैं कि धारावी में आप कल्चरल सेंटर्स बनाएंगे, इस तरीके के नए मतलब आर्ट और एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स और वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से बाकी मुंबई को धारावी
आना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। right. और उसकी वजह से अपने आप ही एरिया की जो डेवलपमेंट है अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। So that is one of the ways of doing it. Cultural issue is one of the issues. The other issue is also make Dharavi into a knowledge center, कि वहाँ लेदर गुड्स बनते हैं, सिरेमिक इंडस्ट्री चल रही है, तो कैन वी क्रिएट सिरेमिक इंस्टीट्यूट ओवर देयर, कैन वी क्रिएट लेदर इंस्टीट्यूट, कैन वी क्रिएट फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, कैन वी क्रिएट ज्वेलरी इंस्टीट्यूट. Things of this sort will bring again mainstream Mumbai and business world also for knowledge as well as for financial benefits into Dharavi. So in effect what you're really doing is, instead of Dharavi being an exploitative center where major exploitation of labor takes place, you will actually turn it into a commercial and cultural hub. That's what you want to turn Correct. it into. We don't want sweatshops over there. Right. We want to brand the product of Dharavi the way Amul has done a fabulous job of cooperative branding. We want products of Dharavi not to be purchased because they're cheap. They should be purchased because they're beautiful, and we want them to be internationally connected because firstly you have a highly motivated group of people over there. Today they are creating 3,000 crores worth of economy. We believe that they can create almost 10,000 crores worth of economy if they follow this plan. And I'm working very closely with the Department of Social Justice also as a part of social work to make this happen. And what you do in Dharavi could be the way forward for the rest of the country to follow in other areas, if it is possible. I absolutely believe that this will become a pilot project, and this is an issue for all developing countries. So this could be possibly one of the models that can be used in other developing nations also, but definitely in India this can happen, because you must think of slum dwellers as human resources and develop them rather than thinking of them as scum of the earth and kicking them around. और ये भी एक बात चल रही थी पहले, मतलब काफी set of economists actually believe this, and I don't know whether you agree or not, but we can bounce it off you, कि किसी भी शहर में अगर झोपड़पट्टी नहीं आती है, स्लम नहीं आता है, तो वो शहर मर रहा है. ये कहा जाता है कि उस शहर की जान जा रही है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं आ रहा है. लोग शहरों में इसीलिए आते हैं और फिर स्लम्स आते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि वो शहर बढ़ रहा है. इट्स अ ग्रोइंग सिटी, व्हिच इज व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू दैट सिटी. Do you believe that? I believe that people must come. लोगों को शहर में आना चाहिए, but I don't believe that they should have to live in slums. I truly believe that affordable housing होना ही चाहिए, और जो भी लोग यहाँ आते हैं, and certainly not these kind of slums. Yeah, certainly not these kind of slums. And not forever. That's right. Not these kind of slums. But I feel that slums should not be there. Create dormitories, create affordable housing, create something on the outskirts of the city for people to encourage, because they are participating in the economic development. And they are part of the economy of the city. Absolutely, absolutely, and therefore they should be respected rather than spurned. And you can't just pick them up and throw them out, because they have a right, like everybody else, to live right here. Yeah, but let's respect the fact that our forefathers came here with exactly the same aspirations. That's right. So we are no different from them. Only in those days we had the opportunity to live, maybe they had the opportunity to live in chawls or some kind of affordable housing. But this is absolutely degrading and totally unacceptable. And it's all because of the lack of space and increase in population, and perhaps because we have not been able to manage our village economies well enough, so that most of the people from the village, because there's no work over there, come over here. That's a simplistic explanation. Absolutely. I agree, but at the same time it is more or less true कि गांव के अंदर क्योंकि काम नहीं होता, गांव के अंदर भूखमरी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इसलिए शहर की तरफ हर कोई आता है. Or in fact they are not very different from our NRIs who go to developed countries. That's right. With measly amounts in their pockets, but those countries accept them and invite them, and you see the way they blossom. And as a result of it, the economies of those countries have blossomed because of the contributions made by our NRIs. Absolutely. And economy of India also, because they are repatriating the money. That's right. So these slum dwellers, if you give them an economic opportunity, the economy of Mumbai will improve, but the economy of their rural areas will also improve, because they'll send back hopefully some money. और मुकेश मेहता जी, ये स्कीम आपकी जो है किस तरीके से काम करेगी, और आज जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है, निर्णय जो हुआ है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा इस स्कीम के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे. और ये थे इंडियन ओशन अभी परफॉर्म करते हुए आज़ाद मैदान पर, और इनके पास हम वापस जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी भी हैं मुकेश मेहता जी. मुकेश साहब, हम जो बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से बॉम्बे की